Very good morning to all of you. Today we are back with the part that we have left for yesterday. एंजाइम के बारे में हम लोग सोच रहे थे. हम लोग yesterday के lecture में we have discussed the active site of an enzyme, and moving further with the topic of enzymes, we will come to a part called as classification of enzyme, which is the lecture for B.Sc. T.Y. Microbiology students. Correct? This is our 5th semester microbiology metabolism lecture. So classification of enzymes, if we consider that enzymes are classified into 6 different classes. For example, one class is called as oxidoreductase, transferase, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. ये ध्यान में रखना है because this is the part you are going to learn in each and every year, even in post graduation level as well in microbiology. So 6 different classes of enzymes are present over there, and all enzymes are ultimately classified under these 6 different classes of enzymes. Now classification of enzymes and coenzymes also is also there. Transfer of groups and another hydrogen for transfer of hydrogens. क्या क्या है देखो. Sugar phosphates NADP NADPH plus, CoSH, thymine pyrophosphate TPP, pyridoxal phosphates, folate enzymes, biotin, cobalamin enzymes, lipoic acids. For hydrogen transfer के लिए क्या क्या है? NADP, NADPH, FN, FMNH2, FAD, FADH2, lipoic acid and coenzyme Q. So ultimately ये reactions क्या होती है? So if you see the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase reaction, that is catalyzing the group of glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglycerate. ये करते वक्त क्या होता है? Transfer of hydrogen would take place. One hydrogen molecule will be liberated out and NAD will remain here. और उसी बेसिस के ऊपर अलग है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की है कि जहां पर ये हाइड्रोजन जो एक्सेस अमाउंट में निकला है, it combines with pyruvate to form lactate. So ultimately coenzyme also plays a very important role in transfer of the catalytic reactions or transfer of group reactions in terms of catalysis. Now IUPAC system of classifications. ये कौन सा सिस्टम है? International Union of Biochemistry and Molecular Biology, that is IUPMB. ये ध्यान में रखने की चीज है कि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, and you should know that it is called an International Union of Biochemistry and Molecular Biology, which was established in 1964, and they have classified and modification has been done in 1972 and 1978 as well. इन्होंने कुछ nomenclature दिया हुआ है. क्या nomenclature दिया है? It is a complex and cumbersome, but it can be clearly understood. As per this system, the names start with EC, that is enzyme commission, followed by 4 digits. Class 1 oxidoreductase क्या करता है? Oxidation reduction reactions. ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, माइक्रो में भी ये पार्ट हो चुका है. Oxidoreductase ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करता है. Transferase ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जो फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर है, that is done with the help of enzymes called as transferase. Hydrolases हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करता है. Lyases ग्रुप एलिमिनेशन टू फॉर्म डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होता है ग्रुप एलिमिनेशन के बाद में, then those enzyme can be catalyzed with the help of lyases. Isomerases isomerization reactions would take place. And ligases bond formation coupled with ATP hydrolysis. Bond formation coupled with ATP hydrolysis. इसके वजह से these 6 different classes of enzymes have been done. For example, ATP glucose pyrophosphate EC number 2.7.1.1. The EC denotes enzyme commission. This EC enzyme commission which developed the systematic nomenclature. First number 2 क्या है? 2 indicates class name. देखो अभी क्या है? Glucose phosphate transferase. Transferase कौन सी रिएक्शन है? कौन से इसमें आया? क्लास 2 में. Indicates class name, that is transferase. आ गया बराबर? Now second 7 number 7 indicates subclass. इसका सबक्लास है. क्या सबक्लास है? तो सबक्लास इज फॉस्फोट्रांसफरेज. ये जो रिएक्शंस है इसमें भी सबक्लासेस है, और वो सबक्लास का 7 नंबर का सबक्लास का 2 मेन क्लास का सेकंड नंबर 7 नंबर का सबक्लास इज कॉल्ड एज फॉस्फोट्रांसफरेज.
Third number 1 indicates subclass phosphotransferase within a hydroxyl group as acceptor. और भी उससे subclass में है subclass. Fourth number 1 indicates D-glucose as phosphoryl group as acceptor, number of particular enzyme in the list. यानी D-glucose के अगेंस्ट में जो phosphoryl group है, that is acting as an acceptor, therefore it will be number 1. Trivial name is hexokinase. Similarly, lactose-dehydrogenase is denoted by 1.1.2.27. ये ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन दी इसी नंबर एंजाइम कंडीशन का जो नंबर दिया हुआ है उसके बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन वुड टेक प्लेस. The system is set which gives each enzyme a recommended name and a systemic name. दो प्रकार से नेम वहां पर हम लोगों को देखने मिलेगी. एक is called as recommended name and another is called as systemic name. Systemic names for enzymes. An enzyme systemic name is used to prevent ambiguity. For example, malate dehydrogenase. इसी नंबर देखो 1.1.1.37 interger words N-malate and oxaloacetate using nicotinamide adenine dinucleotide NAD as an coenzyme. यानी उसको चेंज ओवर भी हो सकता है. Its systemic name is L-malate NAD plus oxidoreductase provides a brief chemical description of the reaction. यानी उसका क्या हो गया? ये सिस्टेमिक नेम हो गया. सिस्टेमिक नेम क्या है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज. लेकिन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज करता क्या है? That it interconverts L-malate and oxaloreductase using nicotinamide NAD as a coenzyme. इसलिए उसको ट्रिवियल नेम जब जाते हैं हम लोग, it will be L-malate NAD plus oxidoreductase. Recommended names. The recommended names are usually formed by adding the suffix ASE to the name of the enzyme substrate or phrase describing catalytic reactions. यानी ASE जहाँ पर वहाँ पर आपको दिखता है अगर, तो it will be ultimately that transferase, lyase, oxidoreductase, ASE सबसे आखिरी में आना चाहिए. Then that enzyme belongs to that particular part of the classification. Urease, catalysis of urea. Alcohol dehydrogenase oxidizes alcohols to its corresponding aldehydes. इसलिए AC अगर रहा तो उसके प्रिकर्सर के ऊपर वो एक्ट करेगा. ये देखो urease, where it will act on the urea. Exception is tyrosine, pepsin, papain, क्योंकि ये उनका मोड ऑफ एक्शन दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर भी कर सकते. They are not substrate specific. Now one by one, oxidoreductase. This group of enzyme will catalyze oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate or coenzyme or transfer of hydrogen or addition of oxygen. This may be represented see this, A plus B, A minus plus B, if A plus plus B minus. यानी ट्रांसफर ग्रुप ट्रांसफर यहाँ पर रिएक्शंस यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्लस NADH gives aldehyde and NADH plus H plus. This enzyme is called as alcohol dehydrogenase. Dehydrogenase यानी उन्हें it is transferring the H plus ions. Okay. Oxidoreductase इसी नंबर देखिए उसका 1.1.1.1. ये देखो पहले हम लोग फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं. ऑक्सीडोरेडक्टेज ये रिएक्शन हम लोगों की चल रही थी. अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज 1.1.1.1 इसी नंबर. Oxidoreductase may also oxidize substrate by adding oxygen. Oxygenases and dehydrogenases ये इसके example है on the basis of which the oxidoreductase can transfer the particular kind of reactions. Second class of enzymes is transferases. This class of enzyme transfers one group other than the hydrogen from the substrate to another group, another substrate. This may be written as A to R plus B gives A plus B to R. यानी ग्रुप ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है. R ग्रुप जो ट्रांसफर था A के साथ में, that is now be transferred to B. For example, hexose plus ATP gives hexose 6 phosphate plus AD. यानी इस
ATP में का जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज बीन ट्रांसफर्ड नाउ टू द एक्सोस शुगर हेक्सोकाइनेज, और वो एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज, AC देखो पीछे साइड में उसको, एंड सिस्टमिक नेम इज ATP हेक्सो 6 फॉस्फेट ट्रांसफरेज। ATP हेक्सोस कौन से पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे क्या ट्रांसफर किया? phosphate group has been transferred, therefore a transferring phosphate group, therefore AC. Therefore this enzyme hexokinase may be also called by the name ATP hexa 6 phosphate transferase. ध्यान में रखिए ये चीज MCQ करके अपने पेपर में आ सकती है। Third class of enzyme is called as hydrolysis. This class of enzyme can hydrolyze ether, peptide or glycosidic bond by adding water and then breaking the bond. ये देखो एग्जांपल देखो, A to B plus water, AH water का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल लिया and BOH, यानी it is breaking that particular water molecule into two parts wherein the H plus ions will be different separated out and OH minus ions will be separated out. Acetylcholine plus H2O gives choline plus acetyl. ये यहाँ पर एसिटिलकोलिन एक मॉलिक्यूल था, इसका ब्रेकडाउन किसकी वजह से हुआ? इट विल बी बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट, कोलिन इज सेपरेटेड एंड एसिड इज सेपरेटेड। और एंजाइम क्या लिया? द एंजाइम इज एसिटिलकोलिन ईस्टरेज और एसिटिलकोलिन हाइड्रोलिस। हाइड्रोलिसिस हो गया उसका, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो गया and one H plus and OH minus ions are separated and two chemical compounds are being separated because of this water entity that is present. जनरली ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिसिस, पेट के अंदर में जो डाइजेशन के लिए मदद करने वाले जो एंजाइम्स है दोस आर ऑल आर हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल ये देखिए हाइड्रोलिसिस का ईस्टरेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस, अमाइडेजेस, ये सभी एंजाइम्स कौन से हैं? दीस ऑल एंजाइम्स आर सेड टू बी एंजाइम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर डाइजेशन। हाइड्रोलिसिस मैक्सिमली डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम, fourth class of enzyme which is present over there, it is called as lysis. These enzymes can remove group from substrate or break bonds by mechanism other than hydrolysis. For example, fructose 1,6-bisphosphate aldolase, glycerol 3-phosphate plus dihydroxyacetone phosphate. ये lysis synthesis groups from substrate and breakdown of mechanism by hydrolysis mechanism की वजह से। उसके क्लासेस क्या है? lysis के क्लासेस देखिए, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में इन्होंने जनरली this different types of lysis can be considered. Isomerases, नाम ही पता चलता है, these enzymes can produce optical or geometric or positional isomers substrate. Racemase, epimerases, cis transfer isomerases are example. Glycerol 3-phosphate, triphosphate isomerase, dihydroxyacetone phosphate, ये अलग अलग एग्जांपल्स है। आइसोमरेज मींस ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर से इंटरचेंज कर सकते हैं। आइसोमरेजेस में एपिमरेजेस है, सिस ट्रांसफर आइसोमरेजेस है, इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफरेजेस है। ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब क्लासेस आइसोमरेजेस के अंदर में आते हैं। Sixth and the last class of enzyme that is called as ligases. These enzymes link two substrates together, usually with the help of simultaneous hydrolysis of ATP. Linking enzyme ligases, वो lysis था, ये ligases है। Ligation means to join. Join किस प्रकार से होता है? For example, acetyl-CoA plus CO2 plus ATP it creates malonyl-CoA plus ADP. Acetyl-CoA carboxylase. ये एंजाइम की वजह से the acetyl group is being joined with the help of CO2 as well. राइट, देखो यहाँ पर अलग अलग लाइगेसेस है जहाँ पर वो उनका जॉइनिंग हो सकता है। राइट, फाइन। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेरेटेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, lysis, isomerases and ligases. So these kind of enzymes, what they do, oxidoreductase, oxidation reduction reaction, example हम लोगों ने देखे। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जनरली स्टमक रिलेटेड जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वहां पर हाइड्रोलिसिस पाए जाते। लाइसिस
ग्रुप एलिमिनेशन ऑफ द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है. आइसोमराइजेशन रिएक्शन जैसे एपिमेरेजेस एक एग्जांपल है उसका. And ligases, that is bond formation with the help of ATP hydrolysis would take place because of the enzyme ligases. So these are all 6 different categories of enzymes and EC number the most important part है which has to be considered. Okay, so that's all for today and we'll stop here.